Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start a very interesting topic, that is virology and viruses. So let's move to the class board. So viruses, an important topic. सो जब भी हम सुनते हैं वायरस का वर्ड तो एक दिमाग में एक अजीब सी कैफियत शुरू हो जाती है, मीन्स के देयर इज समथिंग रिलेटेड टू डेंजर्स, कोई डेंजरस चीज़ होगी, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू मैनी पेनफुल अटैक्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, प्लस इसमें इसके बाद से इसकी डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन्स में इनका क्या रोल था, किस तरह से वैक्सीनेशन डिस्कवर हुई। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज virology. That is the branch of biology that deals with the study of viruses. Clear? For example, coronavirus, और HIV। इसी चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसको। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच कॉजेज एड्स, देन द पोलियो वायरस, and the smallpox virus, then the hepatitis virus, so there are many other examples related to these viruses. You can give a long list. Clear? So virology, the branch of biology, deals with the study of viruses only. And virologist, so basically the scientist, or more precisely the biologist, who studies viruses is called virologist. Clear? जैसे बायोलॉजी के लिए बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जैसे हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, तो इसी तरह से वायरसेस के लिए वायरोलॉजिस्ट, जो इनकी स्टडी जो स्पेशलाइज्ड होता है इनकी स्टडीज़ के हवाले से। सो द वर्ड वायरस, नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, द वर्ड virus. The word virus, it is derived from Latin word venom, that is venom.
which means poisonous fluid, which means poisonous fluid. Clear? और डियर स्टूडेंट्स, ये पुराने वक्तों में से इसको यानी कि poisonous fluid के तौर पर भी जाना जाता था. एक जनरलाइज्ड नोशन था ये. क्लियर? मतलब कि ऑर्गेनिज्म के तो डिस्कवरी के हवाले से तो बाद में बात हुई, लेकिन पहले सिर्फ वायरस आम तौर पर ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था किसी ख़तरनाक बीमारी के हवाले से, कोई डेथ के हवाले से, इस तरह की अलामात को जाहिर करने के लिए. क्लियर? एंड द वर्ड वायरस was generally used to notify dangerous disease and death. Anything which is related to disease and death. कब की बात है ये? In the time of Louis Pasteur and रॉबर्ट कॉश. इनके वक्तों में जो वर्ड वायरस था जस्ट एक अलामत के तौर पर जाना जाता था, मतलब एक नोशन था, मतलब ऑर्गेनिज्म के तौर पर नहीं जाना जाता था, एक टर्म इस्तेमाल होती थी. नाउ व्हाट आर वायरसेस? सो वायरसेस हम इनको इस मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं इसको डिफ़ाइन करने के. मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सी एक डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ वायरसेस की. बेसिकली वायरसेस दे आर ए सेलुलर भी कह सकते हैं, या इसको हम नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं. ए सेलुलर और नॉन सेलुलर मतलब कि इनके अंदर दे डू नॉट शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी, वो 3 तरह की होती है, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर. तो ये किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते. सो दे आर दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए सेलुलर और नॉन सेलुलर infectious entities having either DNA means deoxyribonucleic acid or RNA ribonucleic acid, often encased, जो कि किसके अंदर एनकेस्ड है, किसकी बात हो रही है? डीएनए या आरएनए, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है. ऑफन एनकेस्ड इन अ प्रोटीनेशियस मटेरियल, और प्रोटीनेशियस कोट करेंगे इसको, ज़्यादा वो बेटर आ जाएगा. ठीक है? सो दैट विल बी मच बेटर अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस. सो प्रोटीनेशियस कोट and can only reproduce in a living cell. Clear? So that very acellular or non-cellular infectious entity is called as a virus. इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. सिंपली 2 मेन चीज़ें होती हैं इनके अंदर, एक तो इनका जीनोम डीएनए या आरएनए, और दूसरा इनके अंदर जो प्रोटीन कोड. ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके स्ट्रक्चर के हवाले से. इन्फेक्शियस हैं और बगैर होस्ट के नहीं रह सकते. क्लियर? 2 चीज़ें. नंबर 3, एक और चीज़ याद रखिएगा कि they utilize the biosynthetic machinery of the host
to make their own parts. Clear? ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी, यानी कि चूंकि इनके पास ऑर्गेनल्स नहीं होते, इनके पास जस्ट एक आरएनए, डीएनए या फिर एक प्रोटीन कोट है, तो अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनवाने के लिए, आगे चलकर इनके स्ट्रक्चर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, तो बनवाने के लिए क्या करते हैं, जिस होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, वो एनिमल हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, कोई वो फंगस हो सकता है, इवन के बैक्टीरिया तक को इन्होंने नहीं बख्शा, ठीक है। तो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते होते हैं, तो उनके अंदर वो उनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को ये उसका कंट्रोल संभालते हैं और उनसे फिर अपने बॉडी के पार्ट्स को बना के वहाँ से निकल कर फिर दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। क्लियर? सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द वायरसेस। अब आते हैं स्टूडेंट्स डिस्कवरी के हवाले से, इनके देयर इज पैराग्राफ रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन्स व्हिच इज रिलेटेड टू वायरसेस। इसकी कहानी शुरू हुई थी जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। आपको याद है चैप्टर नंबर 1 में डिजीज कंट्रोल के अंदर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। द फर्स्ट पॉइंट वाज द प्रिवेंटिव मेजर्स, द सेकंड पॉइंट वाज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, एंड द थर्ड पॉइंट वाज ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। तो जो सेकंड पॉइंट था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, उसमें इसका कुछ थोड़ा सा जिक्र आया था, तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। सो बेसिकली जो वायरल डिजीजेस हैं वो दे आर नॉन फॉर मैनी सेंचुरीज। The viral diseases are known for many centuries. मतलब एक सेंचुरी की बात नहीं है कि एक सेंचुरी पहले वायरसेस थे, ये कोई नई चीज़ आई हैं, तो काफ़ी पुराने ये एंटाइटीज हैं, ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, many centuries. Even the first preventive measure was taken against a viral disease. क्लियर? जो सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर लिया गया था बीमारी से बचने के लिए, दैट वाज अ वायरल डिजीज, और उसके वाले से भी बात करते हैं वो कौन सी डिजीज थी। सो द फर्स्ट एवर वैक्सीनेशन was made against not bacteria, not fungi, not parasites, but the viruses, made against the virus. Clear? पहली वैक्सीन, and that was, वो कौन सा वायरस था? That was against, तो याद रखिएगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, that was against the स्मॉल पॉक्स वायरस। उसके खिलाफ पहली दुनिया पे वैक्सीन बनाई गई थी। जैसे कि आजकल जानते हैं आप कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन, ये भी एक वायरस है, कोरोना वायरस के खिलाफ भी बनाई गई। सो जो सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी वो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ बनाई गई थी, स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ, स्मॉल पॉक्स डिजीज़। आगे चलकर इसी चैप्टर में हम स्मॉल पॉक्स को डिजीज़ वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। क्लियर? सो ये कैसे हुआ, हाउ दिस happened? So in 1796 there was a physician by the name of Edward Jenner. अच्छा, इसकी पहले मैं आपको इसकी रिटन फॉर्म कर लें, फिर उसके बाद इसकी सारी आपको स्टोरी सुनाता हूँ।
So Edward Jenner, he used the material of cowpox lion which was present on the hand of milkmaid and inoculated that pus into an 8-year-old boy by the name of James Phipps. James Phipps. Clear? उसका नाम था James Phipps. After 6 weeks, he, means the Edward Jenner, inoculated the boy with smallpox pus, and the boy didn't get smallpox. After that, Jenner inoculated 23 other peoples with cowpox pus, and then inoculated them with smallpox pus, and all the 23 people didn't get smallpox. So as in Latin, vacca means cow, and the material was taken from the cow, cowpox lion, the lowest pasture, named the material as vaccine, and the process of vaccination. Okay. अब आते हैं इसकी स्टोरी की तरफ. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस का तकरीबन 2 साल बहुत ही पीक पे रहा, काफ़ी ख़तरनाक था. पूरी दुनिया के अंदर खौफ व खरास और इतने जो मिलियंस के हिसाब से लोगों की डेथ हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मिलियंस के हिसाब से लोग जो हैं वो इससे जो है वो इन्फेक्ट भी हुए. तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि काफ़ी खौफ व खरास. तो इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में स्मॉल पॉक्स ये ख़तरनाक बीमारी समझा जाता है. जैसे आजकल जो कोरोना वायरस था, कोविड-19, इस तरह 18वीं सदी में था स्मॉल पॉक्स. तो काफ़ी लोग खौफज़दा होते थे इससे, क्योंकि इससे जान भी चली जाती थी लोगों की, कुछ लोगों की जान भी चली जाती थी. सो एडवर्ड जेनर, चूँकि ही वॉज अ फिजिशियन, तो फिजिशियन जो होते हैं दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर्स. एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि ऐसे लोग
जो जिनको एक दफ़ा काउ पॉक्स हो जाए उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। लिसन अगेन, एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। सो ऑब्जर्व किया कि ऐसे लोग जिनको काउ पॉक्स हो जाए उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। अब चूंकि उन दिनों मैं जैसे कि बता रहा हूं आपको कि ये डेंजरस डिजीज कंसीडर किया जाता था, तो एडवर्ड जेनर ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। सो उसको सबसे पहली चीज़ तो थी कि ये इसके दिमाग में हाइपोथेसिस आया कि द पीपल हु गेट काउ पॉक्स दे डिडंट गेट द स्मॉल पॉक्स। काउ पॉक्स एक आम सी बीमारी थी जो कि आमतौर पर जो कैटल से होती है, उनके जहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं या उनके बाकी बॉडी पार्ट्स वहाँ पर होती है, और वहाँ पर एक लेजन सा बन जाता है, और ये इवन ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है काउ पॉक्स जो है, ठीक है, फ्रॉम द कैटल्स, ये इंसानों के अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन फ्रॉम द कैटल्स। तो काउ पॉक्स नाम से ज़ाहिर है काउ से। सो अब प्रॉब्लम ये थी कि इसके लिए कौन जो है इसके सामने वॉलंटियर करे। सो ही टॉक टू द मदर ऑफ जेम फिप्स, जो उसने जेम फिप्स की मदर से बात की किस तरह से अगर आप ये खिदमत खल्क के तौर पर अगर इससे अपने बच्चे को वॉलंटियर करें कि ये मैं एक ट्रायल देना चाहता हूँ कि अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो बहुत सारे जो लोग स्मॉल पॉक्स से मर रहे हैं वो बच सकते हैं। सो उसने कहा कि डेफिनेटली अगर मेरे एक बेटे की वजह से, उसकी एक जान की वजह से कई लोगों की जान बच सकती है, सो आई एग्री, ठीक है। सो जेम फिप्स की मदर ने वॉलंटियर किया, उसने अपने बेटे को समझाया, ही ऑल्सो वॉलंटियर्ड। तो उसने फिर उस 8 साल बच्चे को इंजेक्ट की काउ पॉक्स लेजन से, यानी पस। पस आप समझते हैं ना, पस पढ़ा हुआ आपने, चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ाऊंगा। पस बेसिकली इट इज अ मटेरियल which a greenish white material which contains dead white blood cells and dead pathogens, ठीक है। सो पस क्या है? आ मटेरियल जिसको हम उर्दू में पीप कहते हैं, जख्म के ऊपर बाज़ का तो बन जाती है। सो इट कंटेन्स डेड वाइट ब्लड सेल्स प्लस डेड पैथोजन, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है। तो चूंकि कॉपॉक्स लेजन है तो उसमें कौन सा वायरस, उसमें कौन सा पैथोजन होगा? कॉपॉक्स। तो खैर उसने वहाँ से वो जो मिल्क मेड के हैंड के ऊपर देखा, वो जो दूध दोने वाला था उसके ऊपर वो लगा हुआ था, उसके पस लगी हुई थी, उसने वो उस वहाँ से उसको रिमूव किया और इस बच्चे को इनोकुलेट कर दिया। तो एज सच चूँकि फिर हुआ क्या कि ये बच्चा बीमार हुआ, कॉपॉक्स हल्का जैसे हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है तो इसी तरह से बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सो उस बच्चे को भी बुखार हुआ कॉपॉक्स की वजह से, और वो फिर ठीक भी हो गया कुछ दिनों के अंदर। फिर उसके 6 हफ्ते के बाद, आफ्टर 6 वीक्स, अब 6 हफ्ते के बाद उसी बच्चे को जेनर ने इनोकुलेट की द पस ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब जो स्मॉल पॉक्स की पस उस बच्चे को इनोकुलेट की 6 हफ्ते के बाद, तो अब उसको असली तौर पर तो होना चाहिए था स्मॉल पॉक्स, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्योंकि पॉक्स आप आगे चलकर पढ़ेंगे एक पूरी फैमिली है एक वायरसेस की, जिसमें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड काउ पॉक्स, ठीक है, ये पूरी फैमिली है। सो ये सारे इनके स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो एक दफ़ा जब बॉडी में चला गया तो हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना दी। तो जब वो पहली दफ़ा गया था काउ पॉक्स वायरस, तो वो उसने एंटीबॉडीज़ बनवा दी थी। अब जब स्मॉल पॉक्स गया तो उन्होंने उसकी जो वो ठुकाई कर दी, वो उसको किल कर दिया, ठीक है। तो उस बच्चे को फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सो दैट वाज दिस वाज अ वंडरफुल रिजल्ट। लेकिन आपको पता है कि जो साइंस है वो एक रिजल्ट्स के ऊपर नहीं मानती, एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर नहीं मानती। वो कहती है हो सकता है ये किसी और वजह से हो गया हो सकता है एक्सीडेंटली हो गया हो। सो फिर उसने क्या किया, इस चीज़ को रीप्रूफ करने के लिए फिर 23 और लोगों के ऊपर यही काम किया कि उनको पहले कॉपॉक्स की पस जो है वो इनोकुलेट की, फिर उनको उनको हल्का फुल्का बुखार हुआ, जो सिम्टम्स थे कॉपॉक्स के वो उनको आए, फिर उसके 6 हफ्ते के बाद दोबारा से उनको स्मॉल पॉक्स जो है वो इंजेक्ट किया, लेकिन उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सो ही बिकेम सक्सेसफुल, और उसने फिर कई लोगों की, आज तक देखें पूरी दुनिया में कितने लोगों की जानें जो स्मॉल पॉक्स की वजह से वो बच जाती हैं। तो बचपन से ही इनके जो वैक्सीनेशन कर दी जाती है तो बच्चे जो है ना वो इसके खिलाफ इम्यून हो जाते हैं और इससे जान बच जाती है। तो उस एक बच्चे की वजह से और इस डॉक्टर की, इस फिजिशियन की अक्लमंदी की वजह से अल्लाह ताला ने इसके काम लेना था इससे और लिया। ओके,
और फिर चूंकि इसका नाम हमने वैक्सीनेशन क्यों रखा, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी डिटेल से बताया था। उनकी ज़ुबान में, लातीनी ज़ुबान में, लैटिन में वैका का मतलब होता है काऊ। चूंकि ये मटेरियल वहाँ से लिया गया था काऊ से, उसके पस से, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया वैका से वैक्सीन, और इसके इनोकुलेट करने के अमल का कहा गया वैक्सीनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वायरसेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।